और हम लाइव हो गए। गोइंग लाइव। वन, टू एंड थ्री। वी आर लाइव। हेलो हेलो हेलो। राम राम, सत श्री अकाल, क्या हाल है? वी आर लाइव टुडे फॉर द राउंड ऑफ 16। आज है नेदरलैंड्स वर्सेस, अब क्या बोलूं, नेदरलैंड बनाम यूएसए। हमारे यूएसए यूएसए वाले लड़के आज खेलेंगे द यूरोपियन जायंट्स नेदरलैंड्स। गेम शुरू हो गया है। 1 मिनट 46 सेकंड हो गए हैं। राउंड ऑफ 16, पुलिसिच इज बैक इन एक्शन। पिछली बारी उन्होंने वॉट एवर ही हैड टू डू, ही डन इट। एंड अब सवाल है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब आगे पुलिसिच और यूएसए क्या करेगा? एंड बच गया, बच गया, बच गया। ओहो, पुलिसिच का बहुत बहुत अच्छा शॉट, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू slot it in। बहुत बड़ा सेव नेदरलैंड की तरफ, नेदरलैंड के गोलकीपर का। ही इज ऑन साइड, पुलिस इज ऑन साइड था। लवली बॉल। ही शुड हैव बेरीड इट भाई, बेरी करना चाहिए था। द बेस्ट ब्लडी चाहता, और जहां पे लगनी टांगों के बीच में से निकालने की आदत, टांगों के बीच में से निकालने का मन था उसका, एंड वो टांगों के बीच में से ही रह गया, अनफॉर्चुनेटली। सो सैड बट ट्रू, यही हाल है इनका। सो ऑन दैट नोट, लेट्स टॉक अबाउट भैया टीम न्यूज क्या आई है आज की। इवन दो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, 3-4 मिनट हो चुके हैं गेम के। लाइनअप बता देते हैं। नॉपर्ट 3-4-1-2 with King Louis playing his standard 3-4-1-2 formation. Noppert, Julian Timber, Virgil van Dijk, Nelson Aike, Dumfries, De Roon, Frankie, De Blind, and Klassen with Gapco and Depay at the front. And USA, भाई गॉड, खोल खोल के ले रही है इनकी। Memphis Depay running around, and USA is back for that. For USA, it is Turner, Zimmerman, Dest, Ream, and Robinson making the backline 4-3-3 with McKennie, Adams, Musa making the midfield with Pulisic, Pereira, and Villa making the front line, with Berhalter being the coach for the US men's national team, USMNT, and Louis Van Gaal. The game is being played in Khalifa Stadium today. For today's game, अब मैं इससे इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकती भाई, देखो बहुत डिटेल बता दिए। अब क्या लगता है इस गेम में? अभी तक के जो स्टैट्स हैं, पहले 5 मिनट में भाई यूएसए ले रही है घुमा घुमा के तसल्ली से। बट ये गेम या तो ड्रॉ पे जाएगा, 90 मिनट में जाएगा, या उससे ज्यादा। मेन कहानी है कि क्या ये 90 मिनट जाएगा, सॉरी 120 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा। जिसका जवाब हमें 90 के बाद मिलेगा, क्या जाएगा किस विद पूरा का पूरा पोजेशन इस टाइम पे है यूएसए के पास में। 28 पासेस वर्सेस 12, 78 एक्यूरेसी, और तो कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि सिर्फ 4-5 मिनट ही हुए हैं। सो नथिंग मेजर हैज हैपेंड, नथिंग, नोबडी। सो मोटी मोटी कहानी यही है कि भैया सस्ता गेम हिसाब से। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू विद द गेम। आई डोंट नो व्हाई फिर मेरा आज इंटरनेट शाम के टाइम पे बवाल काटने लग गया है। सो बट जब तक नहीं काट रहा ज्यादा नहीं है। बहुत ही
It says excellent connection. Ah, and we are back again. So excellent connection, लेकिन डेटा ही ट्रांसफर नहीं हो रहा था for some reason. Stream मेरी सब सही है. Everything is working fine. Why is the transmission not happening properly again? Today is again causing me a lot of issues. चलिए, anyways, let's continue with the live stream and do let us know in the comment section below. Chat में आइए, बात करिए. What do you think of the round of 16? What do you think about the draws of the round of 16? क्या लगता है? क्या ये टीमें आगे क्वालिफाई किस तरीके से कर सकती है? नेदरलैंड्स और यूएसए में आपको क्या लगता है कौन जाएगा? Does USA have a chance even of a slight amount? Do let me know what do you think about that, because that is going to be very, very important in terms of how do you see USA performing in the round of 16 um, for in the round. Do you think that these guys are going to be there, not there? So let's see क्या होता है. Allah, Allah, Allah. 8 minutes, 9 minutes. We are into the ninth minute, and is time pay. It is just the USA, 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 and nothing else is happening. The complete movement is in the USA's favor. So that is what it is. Let's see what can USA do today against Netherlands, because this is going to be a very crucial game. If USA qualify, that's going to be a big, big thing for today, because I don't think so. इससे पहले USA ने insights में I don't think so. USA has been winless in the last 11 games against the European nations, drawn 6 and lost 5. And also last time जब इन्होंने Portugal को beat किया था 3-2 in 2002. Overall, USA has just won 3 of the last 23 games against European side, जिसमें 7 ड्रॉ हैं, 13 बारी हार चुके हैं. But last time 1930 और 1950 में उन्होंने इंग्लैंड और बेल्जियम को हराया था. So that is something very, very uh, that's a big thing. That's a very, very big thing for USA for in today's game. How do they take that thing forward? Because that is something to be looked at. And अभी तो यूएसए दबा के प्रेशर लगाया पड़ा है. एंड ऑल्सो नेदरलैंड्स अपने लास्ट 10 वर्ल्ड कप मैचेस लुई वैन हाल के अंडर में अनबीटन है, जिसमें 5 क्लीन शीट्स रखी हैं. दे हैव वन 7 एंड ड्रॉन 3 एंड दे हैव गॉट 5 क्लीन शीट्स इन द लास्ट 6 मैचेस. एंड लास्ट 3 में शटआउट्स हैं in the knockout stages. So and also the only team in the World Cup is to keep clean sheets in the knockouts for 4 consecutive games. और ये goal against the run of play, Memphis Depay scores the goal. Wow, what touch, fans. What a change of run, what a run of play against the run of play. They've scored. Golden Boot winner. Wow. एंड ये पूरी टोन्स लवली मैन, खुला, कोई चांस नहीं, कोई भी चांस नहीं इनके पास. एंड एटलीस्ट नेदरलैंड्स लास्ट 4 अपीयरेंसेस में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा है. द ओनली टाइम दे हैव नॉट डन इट इज इन 2006, जिसमें राउंड ऑफ 16 तक नहीं पहुंचा है. अदर देन दैट, एवरी टाइम दे हैव बीन देयर, दे हैव रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स. So that is a very, very interesting fact, a very, very important fact. USA, on the other hand, Turner का 50वां appearance है USA के लिए, but then unfortunately it is turning star in the first 10 minutes. पहले Netherlands, पहले USA अपना वो रख रहा था, setting up the pace, but now it is changed and now it has become. It has now become Netherlands, and it was Gakpo who had broken through.
44 World Cup goals. Memphis Depay for Netherlands. 44. I think so. इससे आगे से John Klaas Huntelaar थे. I believe he was on 43 and now he's broken that John Klaas Huntelaar का जो रिकॉर्ड था. Yeah. Or only 6 behind Robin van Persie. Number 2 I believe has Memphis has now come in. Number 2 pe. So that is a very interesting factor. Very interesting factor. That's a very intriguing factor actually. मेरे हिसाब से साहिल के पास आज भी इंटरनेट का इशू चल रहा है उसका. आई डोंट नो कब वो ठीक कराएगा, लेकिन करा ही लेगा किसी ना किसी दिन. He should be able to get the issue sorted in the next couple of days, I believe. USA अब प्रेशर डालती थी, trying to win the ball. Good try. USA के पास वापस बॉल, पुलिसिच क्रॉस एंड फुद्दूजा क्रॉस, लेकिन अभी भी यूएसए के पास बॉल डिफेंडर्स स्ट्राइकर के पीछे. और ये नेदरलैंड्स का बॉल रिट्रीव, पास है गैप्को के लिए, पीछे 3-on-1. गैप्को के पास बहुत जगह. इट्स नाउ 4-5-on-3, 6-7-on-5, 8-9-10. पूरी टीम धीरे धीरे वापस आती हुई. नाउ नेदरलैंड गोइंग बैक. Memphis release करते हुए गैप्को को, but then unfortunately he was not able to do so. He was not able to get this thing right now. USA का chant होता हुआ in the stadium. Netherlands are pushing forward. नेदरलैंड्स का अटैक, ये फाउल नेदरलैंड्स का यूएसए के प्लेयर के ऊपर. आंख में उंगली, ये नाक में मुंह, या मुंह में हाथ, सॉरी. आंख में उंगली मुंह में हाथ. आई थिंक सो दैट इज व्हाट इट इज. सो लेट्स सी. Louis van Gaal not being very happy about it. "15 minutes into this game, and Netherlands are leading one ball, 1-0, one ball. But then 1-0, block shots for the Netherlands was one, but overall possession abhi bhi USA ki 56 versus 44, which should be changing in the next few minutes. Other than that, counter attack में सब जगह it is just Netherlands throughout this game right now. So IK के पास ball is going backwards. Timber summer में subject to transfer quite a lot. Julian Timber to Manchester United, but then what we had heard that Louis van Gaal put his foot down. So that is something he's followed his national team coach's advice. जब तक ये मैच चल रहा है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. मेरी कहानी. I was how did I started watching football actually. ये फुटबॉल का क्रेज मेरे को कैसे चढ़ा? फुटबॉल का क्रेज मेरे को चढ़ा 1998 में. Euros 98, I believe it was Euros 98. And in the meantime, before I continue, it is USA going forward.
गलत पास इतना धीरे पास करा लेकिन सीधे वो भी डिफेंडर के ऊपर बैक टू नेदरलैंड्स दी ऑरेंज आर्मी मूविंग फॉरवर्ड ये चीज यूएसए को समझ नहीं है सारी चीजें पास अंदर बॉक्स में जाके नहीं होता कुछ जगह पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए दे शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट दे कैन रन थ्रू द डिफेंस if they have that then it's a different ball game altogether so that is to be looked at that is very very interesting so those are the 1998 is when I started watching football and मेरे भाई ने मेरे को फुटबॉल के लिए इंट्रोड्यूस करा था he we saw Euros. I think that's blind. So रत्ने we were watching Euros. उस टाइम पे इंग्लैंड की टीम अच्छी थी 98 में and I remember that and also what else do I remember? I think so it was Italy, France में Zizou मेरे को याद है. That is the time when I started following football. But entirety में I started मतलब 98 तो it started off from there. National and also watching basketball, started playing basketball also quite a lot. So that is where I started playing my football as such and watching football as such. Till the time, I think the 2000 came, the 98 World Cup था and 2000 Euros था, something of that sort. दोनों में से कोई एक था. I don't remember clearly now. But then that is how it started. And then I think the 98 onwards that थोड़ा craze शुरू हो गया. Newspaper में cuttings आने लग गए. Started following David Beckham quite a lot. Quite a lot. David Beckham and then other footballers as well. Zizou, Figo. I remember Real Madrid की काफी अच्छी टीम थी. Zizou, Figo, एक टाइम पे फिर Beckham भी चला गया वहाँ पे. You had Guti H. ओहो मतलब वो उधर की वो टीम थी मैनेज बाय फैबियो कपेलो आई थिंक सो आई एम टॉकिंग 2003 2 4 5 एरा लेकिन वो एरा भी कम नहीं था रोनाल्ड एंड देन एसी मिलान की टीम बड़ी अच्छी हुआ करती थी एक टाइम पे so that is the time I started following football and started following the game as such my fan मतलब my brother my brother has always followed United. Man City. So I have got a very deep rivalry in terms of the club games. We've had fights about it. And those time, I think so 2099, 2000 में Chelsea was doing okay. 98, 99 पे Chelsea का नाम भी आना शुरू हो गया था. Cup Winners' Cup था, and FA Cup and all of those things were happening. So that is how I started following Chelsea quite a lot. And I think so you guys can see there's the Chelsea logo. 2000, I would like Arya उधर. But I'll slowly change also ये जो light है इधर ये जो frame लगा हुआ है इसमें this is the 2012 winning Chelsea की team so I think you know I don't know if you guys can see Chelsea की jacket है so I've got a lot of things from Chelsea over a period of time you would have heard and understood that Sahil and me have different allegiances and how so this is how it happened and so that is where the football journey started for me watching football and the craze for football there was a time when I used to cry when Chelsea used to lose and Facebook and Orkut हुआ करता था oh good try it was I believe Depay you should have given it to Gakpo good chance 20 minutes in. So that is how the whole thing started for Chelsea during that time. Vialli, Hasselbank, all of these guys coming in. Chelsea started performing well. So that is what it is. And then Roman took over. So the era of football has been absolutely different since then for me. And I've followed the game very, very closely. And after a while, I started following different teams as well. Started looking at United, started looking at City, Liverpool, Arsenal. ये जो टॉप 5 6 आते थे तो उनका गेम फॉलो करते and when you start hearing the commentators and you follow it for 90 minutes
your heartbeat rises, your heartbeat falls. मेरे तो पैर ठंडे हो जाते हैं कभी कभी, स्पेशली चैंपियंस लीग में मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है. एंड दिस इज एन अटैक, बट यूएसए सेविंग इट, एंड नाउ दैट्स अ गोल किक. तो मेरी हालत बड़ी खराब हो जाती है. आई यूज्ड टू बिकम, एंड साहिल और मेरे तो बड़े झगड़े हुए हैं. आई मेट साहिल इन 2010, मेरा सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में. पानीपत जैसी जगह पे आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू वॉच फुटबॉल, लेट अलोन sorry, at least watching Champions League, let alone football as such. But then fortunately enough I found good decent friends, and उनमें से साहिल एक था. रात को 12:30 बजे कॉमन रूम खुलवा खुलवा के हमने मैचेस देखे हैं चैंपियंस लीग के. एंड दैट इज हाउ आवर बॉन्डिंग बिकेम इवन बेटर. साहिल हर फ्राइडे को घर जाता था वापस, एंड तो मंडे को जब वो आता था, शाम को 5 बजे जब हमारी टी होती थी आफ्टर कॉलेज वॉलेज सारा खत्म होके, फिर 5 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक हमारा पंडित्स वाला डिस्कशन होता था. मतलब गाली गलौज से लेके सब कुछ होता था. मतलब किसको किस तरीके से पास देना चाहिए था, उसको उस तरीके से देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए. एंड दैट इज हाउ आई थिंक सो इट स्टार्टेड बिल्डिंग in me of going forward, understanding the game as such, offside rules, एफए को किस तरीके से साइनिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या वैल्यूएशन है, क्यों इतनी वैल्यूएशन है, कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड देन obviously then the FPL came into play. बीच में started playing 15 16 में शायद उस टाइम पे, बट उस टाइम पे उतना फॉलोइंग नहीं था FPL का. But then फिर बीच में खेला. Then I met the rest of my football clan from all across India. A lot of these boys महाराष्ट्र में है, some in Jaipur, Bangalore, Nagpur. So that is how we have this football Jaipur. We've got this footballing community as such, and that is where it becomes very very interesting for all of us as the fans of the game. And हम respect भी करते हैं. It took us a little while because I had grown past that age as such to feel bad about and start abusing if Chelsea loses to different fans. एक टाइम ऐसा था जब Chelsea used to lose, and then और कुछ फेसबुक पे जाके दुनिया से लड़ाई झगड़े करने हैं. काफी देखा है, काफी करा है. But then I never liked anybody saying the wrong thing for the club. But then now over a period of time, it becomes so, I'll not say so mature, but then you start to think rationally for the game. So when you start thinking rationally for the game, then the thing becomes absolutely different. And that is how it is. I believe it is very, very different for all of us. सबका अलग अलग स्टोरी है, सबका अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग तरीका है. So this is what it is. So now in 25 minutes, USA is up. Okay. Dest coming forward, and यही एक time है. इस time पे I think so the teams can slowly anticipate also what do they want. Wow.
ओ वाह, मतलब इतना। अरे मेरे भाई, क्या कर रहा है? मतलब ठीक है, रिस्क लेने का मन है, इतना थोड़ी रिस्क लेना चाहिए भाई। उफ, इट वाज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। डेस्ट, फ्रैंकी के पास, एडम्स के पास, वापस एडम्स। ओह, पहले 2 मिनट के बाद, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ है, एंड आफ्टर दैट जस्ट बी नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स, एंड 10वें मिनट पे गोल कर लिया। लवली, डियोंग, गैप को आगे है, क्रॉस कर। अरे ट्रिकली छोड़ दो भाई, पीछे बॉल दे। ए मेम्फिस मैन, मेम्फिस यार, सेल्फिश प्ले ब्रो, सेल्फिश, सेल्फिश, पीछे की तरफ दे देता। somebody or the other would have come, man. He shouldn't have done like this. Wow. And oh, एक और कॉर्नर। एंड आई थिंक इट्स वाओ। एंड नेदरलैंड का क्रॉस, कॉर्नर से गुड चांस है, यूएसए क्लियर्स। क्रॉस अगेन। ओह, उफ, डियोंग का पास थोड़ा सा लंबा। लवली फिनिश यार, मतलब जो बोलो, बेहतरीन फिनिश। गैक्को का पास टू मेम्फिस। या सेलिब्रेशन। एंड नेदरलैंड अब टॉय करती, एक्चुअली में टॉय कर रही है इस टाइम पे यूएसए के साथ। फ्रैंकी, गैप्को, रॉन्ग पास, बैक टू द यूएस। मेम्फिस, अंदर। ओह, क्या कर रहे हैं यार? लवली यूएसए। ओ, फाउल नेदरलैंड्स का। USA not being able to control the ball.
Ooh, 39 minutes, 31 minutes in. Robinson, lovely. USA going forward. USA का attack fizzle out. Oh, lovely. He's kept the ball in. Kennedy ने बॉल अंदर रखी. Where? Adams. Oh, and 32 minutes in. Comfort उन्हें आराम से पीछे से नेटवर्क इश्यूज कंटिन्यू थोड़ा सा I am sorry about that. It should be now proper. Yeah. Exactly. Wow. My predictions, Mihir, I believe it should be. I would love to have an upset of USA going above and beyond Netherlands because 1-0 now they're leading. So I still want USA to do it. But on an honest opinion, right now a 2-0 is what seems towards uh, for the Netherlands. So this is what I feel 2-0 for the Netherlands. Uh, so that is what I'm very I'm hoping it is against hoping against hopes that that thing continues like that. Ki USA keeps on pressing the way they missed pehle kuch chances jo unhone first 2 minutes mein the way they missed chances. So that was something I didn't expect them to do, but then ab kar hi liye to kar hi liye, nothing can be done. We already more or less in the last bits and pieces of the first half in the last about 10 minutes. So let's see what does that thing come across as and how does it pan out for the Americans, and hope that they come out stronger in the second half.
So that's what my thought is. That is what my thought is for USA versus Netherlands right now. My predictions are like that. I hope they just continue uh, to press. USA continues to press. Lovely. एक ही सोचो और USA has never won. USA has never won a game after conceding first. So that is also a very interesting fact. Very interesting fact जो आ रहा है अब सामने, and that is very very refreshing to see that certain facts do come out in the open when you really want it to have a look at it. Overall अभी तक तो हाफ काफी वन साइडेड. स्टार्टिंग में इट वाज पहले 2-3 मिनट it was the American US men's national team, as they want to pronounce it. Other than that, it has just been Netherlands, trying to defend bits and pieces. But वही है, toothless attack type लगता है. No matter how much you want the Americans to do well or an underdog team to do well against the European big giants, unfortunately, that is what it is. Wow. I think so. US is going back. मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता when a team is down. What this playing from the back does is, ये देखो, चांस पे चांस बन जाता है फिर ऐसे. Playing from the back does is, अगर आप जीत रहे हो तो आप play from the back करो ना. जब आप हार रहे हो तो या ट्राई एंड प्ले फ्रॉम द मिडफील्ड से बॉल जमाना शुरू करो, मिडफील्ड से बॉल बढ़ाना शुरू करो. लेकिन डोंट डू इट पीछे से खेले जाओ. जब आपके ऊपर प्रेसिंग आती है और जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर anybody who's watching, and that's what my thought is. I feel that these guys can do better. Going back doesn't solve the problem. ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है. आप उस जो कंपैक्ट डिफेंस है, आप कंपैक्ट डिफेंस और कंपैक्ट मिडफील्ड उसको थोड़ा सा आप आगे पुल करके ट्राई एंड क्रिएट दोस गैप्स है. लेकिन if you look at it, you need to press more. You cannot go back again and again. Back passing and side passing and back passing and side passing is not going to. आपके पास से बढ़ेंगे और आपका पोजीशन बढ़ेगा बॉल का. उससे ज्यादा nothing is going to happen. So for you, what you have to do is you have to just make sure that those things try and create something from nothing is what you have to do. You have to find those pockets. अगर कोई pocket नहीं दिख रहा है तो just track back take a step back and try and create some space out of it. Try and look at a lob, or try and look at something. If somebody's making a dash from the wings, or somebody you can lob it from the midfield सीधे center में. That might be a possibility. Or you change the wings. Ball का movement हो सकता है, सारी चीजें. There are plenty of options which are there. So if you got plenty of options in between, तो why don't you do that? वो वाला option आपके लिए बहुत अहमियत रखेगा, बहुत बेटर रहेगा, rather than not doing it at all. And USA बॉल ना कंट्रोल कर सकते भूतनी वाले. एक बॉल ना कंट्रोल होती इनसे. अच्छा खासा ऑप्शन था, फिर क्रॉस और ये फिर गोल किक. Not even letting it go on to the corner. And Netherlands playing it from the back. We already entered the 41st, 42nd minute. Reed. Lovely ball. आगे जाती हुई डेस्ट. Where
थ्रो इन। नहीं, बॉल अभी भी अंदर है। कैप्टन डेस्ट के पास बॉल, ट्राइंग टू गोइंग, विया को पास कर दे। नहीं, अरे चार है। डेस्ट का फुटवर्क काफी अच्छा था। क्रॉस, नहीं, विया, ओ व्हाट अ ब्लडी शॉट। हाय हाय, उतना ही गंदा शॉट है, पास अंदर करा खुदू। ओ स्वीट, दैट वाज अ स्वीट। आई विश आई वॉज। अब ये कॉम्प्लीमेंट बोलेगा मीर की क्या बोलेगा आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा भाई, यार थोड़ा तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देता है यार, मतलब इससे गंदा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता था क्या? मतलब आकाश चोपड़ा पागल हो गया है क्या? हाँ। यूएसए नेदरलैंड्स गोइंग फॉरवर्ड। यूएसए होल्डिंग इट बैक, 43 and a half minutes in. Oh, Dest, lovely, going in. Oh, oh, बॉल गैपको के पास स्पीड है। ओ गैपको हैज द बॉल, बट क्रॉस। यूएसए का सपोर्ट आ गया। आखिरी के 2 मिनट में क्यों जान ले आते हैं ये ग्रुप के अंदर यार। वाह। और मेरी टीम पे आके मेरे को बेइज्जती मार रहा है तू साले। सुनने वाला भी तू अकेला है। इससे तो चैट में लिख देना मेरे को पर्सनली। खुले में बेइज्जती करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है बदतमीज इंसान। है। बस we are more or less at the half time. Ooh, 40, 45 and Dumfries cross, Dumfries, and that's a goal. Wow. Now that is, I believe that is the end. Daily Blind, former Manchester United player, current Ajax player. मैंने मना थोड़ी करा, आजा भाई, कभी भी आजा। तू जब बोलेगा तू तब आजा। तेरे पास टाइम होना चाहिए, तू ही दूर बैठे हुआ है, मेरे से क्या बोल रहा है? मेरे से क्या बोल रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ आजा, मजे मारते हैं। ब्लिंड का गोल। डेली ब्लिंड ने अपने वीक साइड पे गोल कराया, वाह, गुड, गुड शॉट।
मेम्फिस डिपाई, डेली ब्लिंड दोनों। अरे नहीं, घर से नहीं निकाला भाई, घर पे हूँ। ये मेरा स्ट्रीमिंग वाला कमरा बन गया है भाई। एंड दैट इज ऑफ टाइम, हाफ टाइम हो गया मेरा। घर से मेरे को कोई नहीं निकाला भाई। अच्छा लड़का हूं मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम तो घर छोड़ो, देश छोड़ के बाहर बैठे हुए हो साले, हमसे बोल रहे हो तुम, हैं? दोनों एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों ने तेरे को गोल करा है आज। एंड दैट्स समथिंग नाइस टू सी, these guys performing, चाहे वो एक्स यूनाइटेड हो, एक्स चेल्सी हो, या एक्स आर्सेनल क्यों ना हो। गुड former players coming back and doing, former Premier League players, I should say, that's doing well in the Premier League, seems very very legit. So that is very very nice to see. So we are at half time. And I think the side should be coming in now, थोड़ी देर में आ ही जाएगा at least. काफी इंटरेस्टिंग गेम है राउंड ऑफ 16. आई थॉट ये लोग, नहीं भाई, नहीं चाहिए मेरे को लुकाकू। मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए लुकाकू। लुकाकू को तुम एंजॉय करो, इंटर एंजॉय करे। हमारे पास लोन पे था, लोन पे ही चला जाए, उससे ज्यादा हम उसको नहीं झेल सकते भाई। नहीं चाहिए मेरे को। 98 मिलियन हमने वो कहो पानी बहा दिए, हर हर गंगे करके। मैं जाके, मैं एज अ चेल्सी फैन जाके गंगे में नहा लूंगा भाई। मैं लुकाकू नहीं चाहिए, लेकिन वापस देख लिया मैंने उसको। बस की नहीं है भैंस की, हाँ तो गंजे की। वो वैसे भी फॉर्मर यूनाइटेड, यूनाइटेड भेज देता हूँ काफी बाय। एक तो क्लब तो बिक ही रहा है तुम्हारा, है, और भी आगे ले लेंगे। लुकाकू फिर भेज देते हैं, तुम्हें चाहिए तो ले लो। काफी पॉग्बा भी बुला लेंगे वापस, दोनों ब्लैक मैजिक करेंगे मिल के। क्या बोलता है, चाहिए तो ले ले। ब्लैक मैजिक के साथ, क्या बोलता है, कर ले कर ले। हैं? बिल्कुल। तेरे को क्या लगता है यूनाइटेड कितने का जाएगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये बता मेरे। डू यू थिंक यूनाइटेड विल बी सोल्ड बाय द एंड ऑफ दिस सीजन? और तुम्हारे बुक्कड़ ओनर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो अगर जाएंगे, क्या पूरा वो दे के जाएंगे, कि दे आर गोइंग टू पार्शली सेल द थिंग? गुड्स वोंट बी रिटर्न वंस सोल्ड। नो, इट इज आई मैं रिटर्न पॉलिसी रखता हूँ। मैं तुम्हें लोन पे दे दूंगा यार, तू लोन पे ले ले यार, लोन पे ले ले। मेरे को लोन पे ले ले, मतलब मेरे को क्या लोन पे ले रहा है, तू ले ले लुकाकू, लोन पे ले ले वापस। क्या पूरा पूरा सेल कर रहा है कि हाफ से, मतलब ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट फुल्ली सोल्ड आउट लग रहा है तेरे को? अच्छा, दैट इज दैट इज देयर, ठीक है चल, फुल्ली सोल्ड आउट। बट कितने का जाएगा तेरे को लगता है? कि तेरे को लगता है तेरे भुक्कड़ वाले इतने आसानी से चले जाएंगे? सुनने, पहले एप्पल आया, फिर एप्पल बैकआउट कर गया, फिर अभी एक और ऐसे तो लुई विटॉन इज बिडिंग, और एलवी बिड कर रहा है। और बता भाई, मतलब हम, और कोई चाहिए? मतलब मुकेश अंबानी तो चल लिवरपूल पे बिड मार रहा है। दो बड़े क्लब एक एक सीजन में सेल हो जाएंगे, पहले लिवरपूल और फिर यूनाइटेड, कि पहले यूनाइटेड और फिर लिवरपूल? तेरे को क्या लगता है? मतलब I'm in general asking, what do you think, what do you feel if that happens, if that happens, Liverpool and United being sold in one season, and Chelsea already है, मतलब एक सीजन ओल्ड ही है बस। ये जो अमेरिकन हमारे आए हैं, और तुम्हारे अमेरिकन अब छोड़ के जा रहे हैं, जब हमारा अमेरिकन आया है, ऐसा थोड़ी चलता है यार, थोड़ा तो पार्टनरशिप चाहिए होती है। मतलब छोड़ के ही चले जाओ तो पूरा पूरा। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम पे काफी सेलिब्रेशंस हो रही हैं आज।
according to plan ही था. I think so. It was a complete plan as to how these guys are going to be performing. मेरे हिसाब से. लवली मतलब पहले गोल की इतनी पासिंग इतनी इतनी फ्लूइडिटी है ना. आई थिंक लुई वैन हाल मिस्ड अ ट्रिक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेरे को लगता है प्रीमियर लीग में वो चीज नहीं ला पाया जो जो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो चीज नहीं ला पाया जो वो लाता. ओहो आ गए आओ आओ I think आओ लेट लतीफ आओ. तुम्हारे साथ तो यही बोलना चाहिए. तुम आओ लेट लतीफ आओ. गेम सेट एंड मैच तो हो ही चुका है. गेम सेट एंड मैच. I think so. गेम सेट एंड मैच तो हो ही चुका है. हाँ. Any chance like last night Switzerland against Serbia का बहुत ही close game गया था. क्या US they haven't shown any character. But नहीं, I don't think so. नहीं आएगा यार. कैरेक्टर है ही नहीं इसके अंदर. गेम के अंदर बचा क्या लुई है. मैं अभी यही बोल रहा था. मैं मीर से बात कर रहा था. मीर का मैसेज आ रहे थे. मैं मीर को यही बोल रहा था. मैंने भाई देख लुई वैन हाल और इधर लुई वैन हाल और मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस्टर ट्रिक व्हेन लुई वैन हाल वाज द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. बिकॉज जिस हिसाब की ये फ्लूइडिटी दिखा रहे हैं ना 3-1-4-2 के अंदर, मतलब तुम्हारे दो एक्स प्लेयर्स ब्लिंड और मतलब द all glitter which glows Memphis Depay. इस पे I would actually have a different thought than what you are just saying, because I'll tell you why. So you are saying is absolutely correct कि वो एक जो formation खिलाता है and he's bringing that fluidity in the Netherlands game. But I'll tell you, there are some managers and there are some formations and there are some tactics which are good for the national teams. And if you try to, and let me tell you. So I'll first talk about the journey which Netherlands had till the round of 16. Okay, they had a scrape victory against Senegal. I'll be very honest. We watched that game till 88th minute. It was like all square. Netherlands were being pegged back by an very, very good and very resolute Senegal. Okay, absolutely. And unfortunate tha wo that once Senegal conceded the first goal, okay, they eventually conceded the other as well, because obviously that was a shock that in the end they were going back, and obviously 90th minute when you concede, so obviously you don't have any other chance. But exactly. Okay, then the next game against Ecuador, okay, which is very important to note over here. Ecuador is not with us right now. Ecuador has already sent back home packing. Okay, by Senegal. They drew with Ecuador. Okay, and it was not at all a good performance. Okay, against Ecuador, because Ecuador was controlling game also at times. It was a kind of I would say a deserved draw against Ecuador. Correct. And then you talk about the next one was Qatar. Okay, Qatar we all know is the weakest team in the group. Okay, correct. So a 2-0 simple victory against Qatar was I think most of us were expecting that they are going to easily move ahead. So why I'm actually talking about this is because when I compare with the club performance, okay, if you again bring the same side, like right now, if you notice the first half, after Memphis scored the first goal, okay, ये पीछे अभी भी देखो. अगर मैं let me add to this what you're saying. अभी भी मतलब even though Netherlands is leading, the majority of the ball possession is with USA. See, that's there. That's the way Louis van Gaal plays. But again, it's not about who is having more possession. But I'll also tell you one thing. When Memphis scored, so US has to play constructive football, right? They have to try and break down Netherlands. Okay, Louis van Gaal as a manager, even at Manchester United, the games
he was leading. It was हाँ. very difficult to beat him. It was very difficult to beat him. I think during Louis van Gaal's time, United against top 5, top 6 were very good. Okay. The problem comes with low block. This kind of a formation, this kind of entire way how Netherlands and how Louis van Gaal sets up. The problem comes when you are facing a team which is doing a low block. Now, in this case, US can't afford to do that. मतलब वो Sam Allardyce वाली टीम होगी ना? मतलब it is a refined version of Sam Allardyce's style. ठीक है? I would not see. We all know Louis van Gaal और Sam Allardyce का भी चक्कर पड़ा था जहाँ पे वो पूरा सीट उठा के ले आया था. पूरा सीट उठा के ले आया था. ठीक है? I would not compare him with Sam Allardyce, with all due respect to both of them. But I'll tell you, this kind of a style, no, it works out well in the international tournaments. Unfortunately, in the club tournaments, suppose it's Manchester United versus, let's say, who? Let's say a team which is like, let's say in a Europa League also, any Club Brugge or any Club Brugge plays in the Champions League right now, but any simple, any Europa League team also, Omonia or some lots, right? Now, you don't expect Omonia or these small teams to actually come up to Old Trafford or come to United and really try and emphasize their play. They will play a low block. They will always play a low block. That's the problem where Louis van Gaal's team actually, they're actually found out, because unfortunately they are unable to break that low block system. और international football के अंदर अब वही चीज है. Now US knows कि ये two-legged affair तो है नहीं, कि second match अब US में तो होने नहीं वाला. ठीक है? Whatever happens is happening either in 90 minutes or maximum 120 minutes and penalties. ठीक है? So they will have to throw everything in. Right? So that's why I say कि Louis van Gaal in this kind of a tournaments, like a national tournament, I think he's a very good coach. I'm not saying he was not a good coach at a club level, but those days were, I think, behind him when he was managing days of Barcelona and stuff. I think football has also changed at the club level at least. बिल्कुल. But do you think US is going to rule that pulisic बिल्कुल in the second match? 200%. बिकॉज़ पता क्या, मैं एक चीज बताता हूँ. That was simple, sister. That was simple. बहुत ज्यादा. मैं तेरे को दो चीजें बताता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे को दिख रही है इसके अंदर is one thing very very straightforward कि यार इसके अंदर when we talk about while what I was trying to say for Louis van Gaal कि क्लब फुटबॉल में आप ये तूने बोला ये जो certain formations are good for the national team, right? ठीक है? And I believe 3-4-3 एक ऐसा फॉर्मेशन है यार, 3-1-4-2 जैसे ये वाला फॉर्मेशन है, 3 at the back वाला फॉर्मेशन does very well at a national level, right? Very well at a national level. But अगर तू एक चीज नोटिस करे, Chelsea under Antonio Conte made the same thing. I'll give you a different perspective on it. कि 3-4-3 formation in Champions League is a big problem. In Europe basically. In Europe is very big problem. Premier League में आप खेल सकते हो. आज के टाइम पे Premier League में काफी लोगों ने उसको अडैप्ट भी किया है. But sister, tell me one thing. 3-4-3 right now it's not about the formation. Right now it's all about the style. How Louis van Gaal sets up. So formation is Louis van Gaal का formation and the way his team sets up. That is what I'm saying. There was a certain the problem is at the mental level of a club. If we're talking club football, national team में शायद वो चीज होगी नहीं होगी, that's a different thing altogether. यहाँ पे हम बात करें तो at a mental level of a club. अगर mental level of a club के ऊपर बात करें, then the thing is very very clear that भाई at the end of the day हमें बहुत important factor ये रखना है कि club football overall भी is equally is very competitive for 9 months period. आप उस चीज को ऊपर नहीं रख सकते. नंबर 1. नंबर 2, जब एक नया मैनेजर आता है तो अपना स्टाइल लेके आता है. लुई वैन गाल गॉट हिज ओन स्टाइल, लेकिन अब 26 साल से एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल 26 साल छोड़ो,
1 साल 1.5 साल एक बंदे ने एक टीम रिफाइन करी, उसके बाद उसको सैक कर देते, फिर दूसरा बंदा आता है, वो अपनी टीम रिफाइन करने में लगता है, अपने हिसाब से खेलता है. दैट इज स्टिल इजियर फॉर अ प्लेयर टू अडेप्ट टू. For a Right. club like, now that is what I'm talking about Chelsea. Now let me go back and talk about a club like Manchester United. For 26 years, you played a very different level, different level of football, which people got used to. Now, when you got David Moyes, you got Jose Mourinho, you got Louis Van Gaal, you got who else did you bring in? अभी को लेके आए तुम, Ragnick को लेके आए तुम, Ole को लेके आए. I missed, if I missed somebody, I don't know. But you had Ryan Giggs also in between as an interim. You had Ole in interim and then permanent. So if you look at it in that period, सबको ये लगा यार boring style of football है. The style was boring because वो बहुत slow moving game. I'll put a question to you on this. So you mentioned style is boring. I'll tell you. हमने कल स्विट्जरलैंड सर्बिया वाला गेम देखा था, ठीक है, और हम अभी तक 47 मिनट्स हो गए हैं नेदरलैंड या यूएसए वाला गेम देख रहे हैं, ठीक है. चल टेक द गोल्स असाइड, 5 गोल पड़े थे उस मैच में, इसमें भी शायद 3 या 4 पड़ सकते हैं, आई डोंट नो, 4 तो ही जाएंगे, ठीक है. Tell me which one was more exciting to watch as a fan? I think Serbia, first 47, if you really want to know, first 47 minutes were more exciting to watch between Serbia Switzerland. उसके बाद it was dead. Absolutely. Now 47 के बाद कुछ नहीं था उस गेम के अंदर. Now just try and compare what happened in this game. Third minute में, it was second minute or third minute, I don't know. Second minute it was pulisic missing a very simple chance. Okay. 10वें मिनट में मेम्फिस ने गोल मारा और 45th प्लस 1 में 45 में उसने मार दिया, ठीक है. जो 10th मिनट के बाद 45th मिनट तक नेदरलैंड्स ने बॉल की अर्जेंसी ही नहीं दिखाई, ठीक है, बिकॉज नेदरलैंड्स आर सेट अप लाइक दैट कि once they lead, they are not going to pressure anyone unless you are closer to their final third. Correct. ठीक है. अब ये देखिए कुछ नहीं हुआ. हाँ. But what I'm trying to say is कि when you talk about club football, when you talk about a club like Manchester United and all, you are going to face at least 10 teams in the league itself, okay, who would be happy to get a point against you. Right? Now, to get a point against you, what a team should be doing is, and just saved off the line. US is attacking, which is good for them. वो तो करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई. हाँ, करना ही पड़ेगा. मेरे को एक चीज समझा, continue the point. बोल. I was coming on to that. So I was just saying, so there are at least 10 teams who want a point from you, and once they get a point from you, that will be a good result for them. Okay. So I'm talking still about that 2015 era जब लुई वैन हाल था, ठीक है, क्योंकि still वो ओल्ड ट्रैफर्ड की वो जो जिसे कहते हैं ना that period of invincibility that was slowly going away, but अभी वो 2 साल पहले ही चैंपियन थे, तो इतना भी बड़ा नहीं था कि it was like still ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाना used to be a big deal, right? Now when you have 10 teams in a league who are happy to get a point against you, ठीक है, they will set up like this कि यार 70-75 मिनट तक हम 0-0 कर लें, ठीक है, उसके बाद ना आखिरी के 15 मिनट में लक होता है, it's anybody's game, right? Maybe आखिरी के 5 मिनट में हमने स्ट्राइक कर agree, right? Now लुई वैन गाल की टीम उस टाइम पे they were struggling because every team was playing a low block except the big sides, except the top 6, right? और जब कोई टीम चढ़ के तुम्हारे पास आएगी ना, then you have the time and space to do the counter attack, जो कि हमने देखा. गैक्पो वाला भी एक चांस था जो कि मेम्फिस तक ऑलमोस्ट बॉल पहुंचने वाली थी, that cross. So that is what I'm trying to say कि this kind of a formation is very good for an international level of football, but club football में you can't play what 50-60 games in a season with this kind of a ये own goal होता, बच गया ये ओन गोल होता, प्रॉब्लम यही होती.
नहीं, आई एग्री, मैं बिल्कुल पॉइंट सही बोल रहा हूँ। 10 टीम ऐसी होंगी प्रीमियर लीग के अंदर जो 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 बिल्कुल ही दे वुड बी डेड रॉक, मतलब बिल्कुल ही, मतलब तुम उनको धक्के मार मार के भी ना खोल पाओगे। टीम लाइक सदरलैंड फॉर दैट मैटर, आई गिव यू वेरी सिंपल, टीम लाइक सदरलैंड, वेस्ट ब्रॉम, अभी अभी लेस्टर, अभी लेस्टर तो नहीं, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट तो अभी भी अटैक ही करती है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का तो एक ही, बट दीज टू, आई रिमेंबर दीज टू टीम्स बीइंग लाइक दैट। I think with the arrival of Pep Guardiola and with the arrival of this Klopp, I think things have changed. Every team now attacks. ठीक है, वो most of the teams they attack only in the Premier League. तो वो चीज तो हो गई है, but I'm talking about those times when Louis van Gaal के against, like every team used to sit back and take something. हाँ, obviously नहीं, मेरा कहना वो नहीं था जी, while I was talking about the formation also, मेरा कहना बस ये था भाई, मेरा कहना बस एक ये था कि जब तुम्हारे पास, when we talk about the formation of a game and we talk about Louis van Gaal, and why I feel United missed a trick, because they, at the end of the day, pressure of the fans does talk. No matter हर कोई बोले कि यार हमारे फैंस, ठीक है, फैंस डू वॉइस देयर ओन कंसर्न्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैंस का फैंस को कितना उस चीज में इंपॉर्टेंस होना चाहिए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, है ना? मेरे को यही लगता है, मेरे को अभी भी यही लगता है कि यूनाइटेड मिस्ड समथिंग इन टर्म्स ऑफ अ ट्रिक, बिकॉज या तो इतना क्रिटिसिज्म मिल गया फ्रॉम द ब्रिटिश मीडिया रिगार्डिंग द प्ले व्हिच लुई वैन हाल हैज, इतना क्रिटिसिज्म मिल गया फैन से कि यार इतना स्लो बोरिंग गेम है, अगर मेरे को सोना ही है तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड देख लेता हूँ। हाँ, राइट। अब वो चीज जब नेशनल टीम पे आती है, जब 90 मिनट होता है, तो फिर 90 मिनट्स और 3, मतलब चाहे ठीक है, चलो तुम 6 गेम देखते हो ऑफ अ पर्टिकुलर टीम, फॉर दैट मैटर टॉकिंग अबाउट नेदरलैंड्स और लुई वैन हाल, 3 गेम इसके वो हो गए, वो तुम चलो छोड़ दिए तुमने, राउंड ऑफ 16 हो गया, अगर ये क्वालीफाई करते क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल, दैट्स अबाउट व्हाट 7 गेम्स इन टोटल। एग्जैक्टली 7 गेम 90 मिनट के ईच, प्लस एडेड टाइम और प्लस पेनल्टी ले लो, मोटा मोटा खींच लो, 100 मिनट के तो एक गेम हो ही रहा है आज के टाइम पे, 120 मिनट का एक normal match is running for about 2 hours, right? At least at this World Cup, है ना? So जब एक वर्ल्ड कप में 120 मिनट के लिए एक वो चल रहा है, my question is that तब क्यों नहीं बोरिंग दिखता? Just because it is the national team and वो 6 दिन के लिए खेल सकते हैं, लेकिन वही चीज 38 गेम वीक के लिए होता है, then that is a difficult thing. या इसलिए कि the other teams, when it is the national team, so everybody is gunning, everybody is gunning to qualify, या वो चीज है। So that is something, that is what I was trying to say, कि everybody is there to for the qualification purposes. तुम 7 गेम 8 गेम तुम क्वालिफाई ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा तुम कैसे करोगे फिर? Isn't it? तू बता मेरे। अच्छा, एंड नेदरलैंड्स के पास बॉल, lovely Gapco, but US holds it on. Lovely movement. Musa. Bergwijn. But किस बात की पेनलाइजेशन थी? चढ़ गया था इसलिए? अच्छा, 55 मिनट हो गए।
So 55 minutes in, and cross in. Adams, Robinson, lovely. Netherlands going on the attack. नहीं पीछे से खेलेंगे वो लोग. USA pressure करती जा रही है, trying to pressure and make a meal out of this game. We still have time. They still have time. They still have time. Blind, Cup Miners, Frankie, जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को चू काटा इस सीजन. वर्गवाइन, जिसका स्पर्स ने चू काटा. कप माइनर्स, ब्लेंड, हेलो हाँ हेलो माइक टेस्ट. हाँ माइक टेस्टिंग 1 2 3. हाँ आ रही है आवाज. आज राउंड ऑफ 16 शुरू हो रहा है और मेरे नेट ने मेरी लेनी शुरू कर दी है. मेरी भी ली थी शुरुआत होते सार ली थी मेरी. मैं पूरा ही जूम मीटिंग में पता नहीं कैसे म्यूट हो गया और उसके बाद फिर मैं आउट हो गया और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया. फिर मैंने सब कुछ डिस्कनेक्ट करके दोबारा स्टार्ट किया. अच्छा नहीं. हाँ, so I don't know if you heard my last statement, and I don't know if you were able to listen to it. My only question to you was that 90 मिनट 38 गेम वीक में प्रॉब्लम है 3-4-1-2 देखने के लिए, लेकिन 7 गेम जिसमें 2-2 घंटे वही सेम चीज दिख रही है नेदरलैंड्स के वर्ल्ड कप वाले मैचेस में, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, और यूरो इज नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम. आई टेल यू व्हाई. नेदरलैंड जिस तरीके से खेल रही है, ठीक है, whether you call it fortunate or unfortunate, अगर वो अर्जेंटीना के साथ खेलने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में, ठीक है, अर्जेंटीना के अगेंस्ट अगर सपोज पहला अर्जेंटीना ने गोल मार दिया, ठीक है, दिस लेवल ऑफ प्ले विल गेट एक्सपोज्ड देयर. आई टेल यू व्हाई. देखो एट द एंड मेरे को ऐसा लगता है, सी आई टेल यू वन थिंग, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे को ऐसा लगता है कि जब when the level of play which Netherlands has, I still feel yes, they might get exposed, ठीक है, they might get exposed in the long run, or they might get exposed for that matter कि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, ठीक है, but at the if you look at it, that what that does is कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि what Netherlands does is they say, and what I feel is कि I'll play my game, ठीक है, I'll play my game no matter what is happening left, right and center. I'll play my game, and what Netherlands does is more or less force कर देती है लोगों को to play like their game. But sister, I agree to your point also, but मेरा एक इस पे point उससे क्या होता है ना, उससे एक चीज होती है, I'll tell you why. If Netherlands does that, it puts the tactic of the opposition team in waters, because तुम क्या करते हो कि तुम अटैक की कोशिश में जाते हो, एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई छोड़ ही दो फिर, क्योंकि जब तुम अटैक के लिए जाते हो तो पीछे 7 लोग खड़े हैं, जब तुम डिफेंस के लिए जाते हो तो उनका अटैक वैसे ही चल रहा होता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बॉल लेके आते हैं, जब तक कोई पूरे, और उसके बीच में भी वो गैप निकालते हैं. Exactly. The irony is that you cannot create a gap in the Netherlands wall. तुम देख लो उसमें से जितने भी तुमने गेम देखे, बहुत मुश्किल से गैप निकल रहे हैं. मैं इसलिए इरिटेट होता था यूएसए से, बिकॉज दे नॉट बीन प्लेइंग फास्ट इनफ
कि वो गैप्स को खोल सके। वो यूएस के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो एक जैसे कहते हैं ना, लैक ऑफ अर्जेंसी। हाँ, वो ठीक है, नहीं है, अभी 60 मिनट हो गए, अभी तक अर्जेंसी नहीं आई है। हाँ, और जैसे पॉइंट जैसे गेम और आगे बढ़ेगा, बच बच गया, गया। बट जैसे जैसे गेम में और आगे बढ़ेगा ना, प्रॉब्लम ये होगी कि व्हेन अ यूएसए के पास टीम, फिनिशर नहीं है, किसके पास? यूएसए के पास हाँ, दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर प्रॉपर। स्ट्राइकर स्ट्राइकर। ओ सेव है भाई, सेव है यार। See, nothing against Netherlands. See, I have been a big shot orange supporter like since a lot many World Cups. ठीक है, हाँ maybe because of like जैसे उनका स्टाइल होता था, रॉबिन का, and RVP used to be there, and हाँ, Schneider and all those guys, the way they करेक्ट used करेक्ट करेक्ट। to, मैं भी आज and आज also आज वही वही स्टोरी बता रहा था मैं भी। and, and also the fans as well. So I have been a huge fan of Netherlands. But I'll tell you one thing. हम्म अगर नेदरलैंड्स इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचती है ना, यू हम्म विल सी अ रिपीट ऑफ 2010 काला स्पेन वाला हिसाब, जब इन्होंने पूरा टूर्नामेंट इतना इतना बोरिंग, मतलब मेरे लिए एज अ फैन इट वाज अ वेरी बोरिंग वर्ल्ड कप। हर मैच 1-1-0 से जीतना, ठीक है, पूरा टाइम बॉल रखना, ऑल्दो नेदरलैंड्स डजंट प्ले विद दैट काइंड ऑफ अ पोजीशन, दैट टिकी टाका, दे डोंट प्ले लाइक दैट। बट when you say ना कि वो बोरिंग हो जाता है, हाँ वो हो जाता है बोरिंग। आई टेल यू व्हाई वो बोरिंग क्यों हो जाता है, एंड आई थिंक वो राउंड ऑफ 16 और नॉकआउट्स में हमें ज्यादा देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि जितना देर एक टीम, अगर एक टीम ने 5वें 10वें मिनट में गोल मार दिया ना, ठीक उसके है, वो पीछे हो जाएगी। वो पीछे हो जाएगी, वो पीछे हो जाएगी। और या तो ऐसा होगा कि बोथ द टीम्स विल स्टार्ट वेरी स्लो, 90 ऑलमोस्ट 60-70 मिनट तक 0-0 चलेगा, एंड देन मे बी दे विल ट्राई एंड ब्रिंग अप टू स्पीड कि चलो कुछ करना पड़ेगा, लाइक दैट। हाँ You will see हाँ those kind of games a lot now with the knockouts. हाँ, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। डेंजल डम्फ्रीज। और बाय द वे अभी हमारा लास्ट टाइम हम सारे नेदरलैंड्स के मैचेस हम कवर कर रहे हैं। हाँ हम हमने वो वाली बात तो आज छेड़ी नहीं कि गैक्पो का एक और गोल, और प्राइस कितना हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने कितना छोड़ा था, 100 100 105 105 105 हो गया था, 105 हो गया था। 105 हो गया था ना। आई थिंक आज एक अभी और, तक गोल नहीं मारा उसने। हाँ गोल नहीं मारा, बट असिस्ट तो दिया है, असिस्ट के चल 5 डाल दिए, 110 हो गया। 110 हो गया। मतलब कहने का ये बात है कि अगर एक और गोल मार देता है वो नॉकआउट्स के अंदर, 150 तक तो पहुंच ही जाएगा। कोई भी नॉर्मल, मतलब हम लोग तो आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे फिर तो, इन टर्म्स ऑफ बाइंग हिम। यार देखो, बाय द वे उससे याद है, वो हो गया एनकुंकू, चेल्सी, हियर वी गो। वो तो बहुत पहले हो गया था। नहीं नहीं, कल हुआ बे। नहीं, बट कल रूमर्स बहुत पहले थे, रूमर्स चल समर रहे से। थे, अबे रूमर्स चल रहे थे, वो तो पिछले समर से चल रहे हैं, हम्म जब वो साल्जबर्ग से लाइप्जिग चला गया। मुझे लग रहा था तुम भाई को ले रहे हो। भाई वाला भी एक और आ गया भाई, भाई वाला फिर रूमर घूम फिर के हमारे को आ गया भाई के यहाँ। बट अब तुम क्या एनकुंकू को ले लोगे तो भाई को क्या करोगे फिर? एनकुंकू समझ में आ रहा है ना मेरी जान। अच्छा, समर में आ रहा है, बट भाई 6 महीने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे पास। नहीं आएगा भाई, हमारे ओनर भी तो जूतिया है ना, अमेरिका। मैंने सुना है भाई जा रहा है सऊदी अरेबिया। भाई 170 मिलियन का भाई तो ऑफर आया है, तो वो जाएगा क्यों नहीं। 500 मिलियन का आया मैंने सुना। 170 मिलियन है एक सीजन का। मैंने 500 मिलियन सुना है। हाँ, 170। आई बिलीव इट वाज 170। 350 तो उसको उसने इंटरव्यू में बोला है यार, 500 आया है। 500 आया होगा, मे बी, आई डोंट नो, मैं आई हर्ड, आई व्हाट आई रेड वाज, आई थिंक मे बी आई मिसरेड। वहां तो शेख बना देंगे उसको, अरे शेख। अरे शेख क्या छोड़ो बना उसको, देंगे? तो वो बना देगा, जमाई राजा बना देंगे उसको। शेख क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाएगा वहां पे। डम्फ्रीज। Dumfries, I've always liked him in the international tournaments. He's playing very well. Dumfries हाँ, यूरोज में भी बहुत अच्छा चला था ये, लास्ट वर्ल्ड कप में भी अच्छा करा था इसने। यंगस्टर है यार, टाइम है इस पे अभी। इतना भी यंगस्टर नहीं है मेरे भाई। अरे हमसे तो, हमसे छोटा ही होगा, यंगस्टर ही बोलेंगे ना उसको। अच्छा, हमसे छोटे को यंगस्टर क्यों? हमसे हमसे छोटे वाले सारे यंगस्टर है।
आई थिंक तो यूएसए के क्या ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन है, डबल By the way, सब्स्टिट्यूशन, by the way, डबल है। this Memphis Messi, हाँ amazing goal, हाँ, अरे मेम्फिस मेसी तो भाई छा गया आज। थंडरबोल्ट था वो, भाई थंडरबोल्ट था ऐसे वो। ऐसे ऐसी सेलिब्रेशन मारी है भाई ने, वो भाई कान की में। यही सेलिब्रेशन है, भाई और की क्या, यही सेलिब्रेशन है ये वाली। हाँ, ना कुछ ना वो गांधी जी का भाई गॉड वो है। ना बुरा सुनो, हाँ, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा करो। बस। हम्म। यूएस को अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी, 20 मिनट का गेम रह गया, इट्स अ सिंपल गेम मैनेजमेंट जो चल रही है वहां से, नेदरलैंड से। हाँ, आई थिंक सो दे शुड डू बेटर, दे शुड डू बेटर नेदरलैंड्स। भाई ये देख, अब मेरे हिसाब से अब तो मेरे को एक ही बता, 66 मिनट हो गए, हाँ, ठीक है, डबल सब्स्टिट्यूशन यूएस का, 66। अरे पीछे अर्नब गोस्वामी नहीं लग रहा तेरे को वो? वही मैच देखने आ गए क्या? लगा तो मेरे को अर्नब गोस्वामी देख रहे, लग नहीं था तेरे को वो बोर्ड के पीछे ऑफिशियल हाँ। चश्मा पहन के? लगा तो मेरे को अर्नब गोस्वामी था। हाँ, सो नहीं, what I was saying was कि this 66 minutes in, Via and McKenzie is off, and who have Aronson and Wright have come in for the USA. I believe those are all attacking players. मेरे को एक चीज समझा जरा मेरे को, एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू नो। मैं ये बात पे तेरी मेरी डिस्कशन शायद इस बारी 2-3 बारी हो चुकी है, बट आई वांट टू स्टिल टच दिस टॉपिक। मेरे को एक चीज समझा भैया, जब तुम्हारे पास बॉल है, तुम ऑपोजिशन के बॉक्स में हो, तुम तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है गोल स्कोर करने की। दो चीजें आजकल लोग क्यों करते हैं, एक एक एक्स्ट्रा पास क्यों देना है, नंबर 1, और दूसरा उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे ऊपर 4 डिफेंडर्स चढ़े हुए, तुम उसके अंदर ट्रिकरी क्या कर रहे हो? इसका जवाब दे दे मेरे को भाई, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, और मेरे मुंह से सिर्फ गाली निकलती है जब कोई ऐसा करता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर क्यों ना हो। अब क्या है ना, Like, why don't people make it bloody keep it simple? When you're in the box, you get the ball first time and you bloody shoot. That's what you have to do. अगर तुम्हारे पास डिफेंडर है तो तुम ठीक है, डिफेंडर है तो 1 सेकंड ले लो, अगर तुम ओनली सिंगल पर्सन, तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर साइड में ले जाओगे, यू माइट हैव अ सपोर्ट, तुम क्रॉस कर सकते हो। मेम्फिस डिपाई के पास एक और ऑप्शन था आज, जहां पे वो सेल्फिश होने लग गया एज यूजुअल, द वे ही वाज, द वे ही इज। सेल्फिश हुआ, उसने पास नहीं करा और वो कॉर्नर चली गई, कॉर्नर से फिर कुछ नहीं हुआ। अब ये जो तूने बात बोली है ना भाई, रिगार्डिंग बोथ द सिचुएशंस, बोथ आर मतलब काइंड ऑफ ऑपोजिट सिचुएशंस, बिकॉज एक केस के अंदर वन इज बिकमिंग एक्स्ट्रा कॉशियस, ठीक है, और एक केस के अंदर वन इज बिकमिंग टू सेल्फिश, लाइक ही वोंट पास द बॉल टू अ टीममेट हु इज इन अ बेटर पोजीशन देन हिम, ठीक है। नहीं, आई एम टॉकिंग, मैं तो वो बोल रहा था भाई, एक एक्स्ट्रा पास बता दो, और ट्रिकरी क्यों करते हो? मेम्फिस तो चल वो तो बाय द बाय आ गया अंदर कॉन्वर्सेशन के। सी आजकल थोड़ा सा ना, लाइक इवन इफ यू सी द टेलीकास्ट, ठीक है, हम कब से, हम 2002 का वर्ल्ड कप देखा हमने, ठीक है, मैं तो 98 से बात कर रहा था। 98 भी देखा हमने, ठीक है, 98 देखा, वर्ल्ड कप 98 में 98 देखा, मैं इतना बोलूंगा, 98 में इतना हाल तो होता था कि मतलब जो नॉकआउट्स होते थे वही दिखते थे, ग्रुप स्टेज की इतनी टेलीकास्टिंग नहीं होती थी, ठीक है। मैं एटलीस्ट मैं ये बताऊं, 2002, 6, 10, 14, 18, 22, ठीक है, 2, 6, 10, 14, 18 और 22, राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू 6 वर्ल्ड कप हो गए ना हमारे, 6। we are in the record books, we are more than Messi and मोर Ronaldo. देन मेसी एंड रोनाल्डो, अब बात यही चाहिए हमें, 6 वर्ल्ड कप देखे हमने। हाँ, ठीक है। Now and don't say such things on live streaming, don't make us feel very old, ठीक है। अरे नहीं यार, हम जवान है, अभी भी हम जवान है, बाल थोड़े से हो रहे हैं, बट ठीक है, बाकी सब तो सही है। सबके हो रहे हैं, वो तो क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, तो what I'm trying to tell you is कि अभी एक सेकंड, एक ये ऑरेंज फैन जो आया था ना, उसके साथ में एक ये शायद पोर्चुगल का फ्लैग लेके लड़का खड़ा है। मेरे को 2 मिनट के लगा वो चाय वाली टपरी होती है ना, टपरी वाला लड़का वहां पे क्या कर रहा है होंगे यार टपरी वाले अपने। अरे
यूपी वाला भैया What I was भाई। trying to say with that was कि जिस हाँ तरीके से टेलीकास्ट के अंदर भी यू सी कितने कितने नए नए स्टैट्स आते हैं, राइट? हाँ इस बार के वर्ल्ड कप में एक नया स्टैट लेके आए हैं वो बॉल पोजीशन का, कि इन प्ले में कितनी बॉल है और कौन सी टीम के पास कितनी है, और बीच में इन प्ले है। ओ व्हाट अ सेव, डबल सेव, दैट कुड हैव बीन 3-0 एंड ऑलरेडी गेम सेट एंड मैच तो है, फिर तो क्लोज ही हो जाता गेम। वो लास्ट नेल इन द कॉफिन हो जाता। डबल सेव, अच्छा सेव था यूएस गोल हाँ की। सो you see how much emphasis these days is on these technical aspects, right? Stat, करेक्ट। numbers, हाँ the data piece and ये और वो और फलाना और ढिमकाना, कितने कितने टचेस, वो कितने किसके वो, है ना? हाँ अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि व्हेन अ पर्सन इज देयर इन द बॉक्स, ठीक है, हाँ और वो जो तू एक्स्ट्रा टच की बात कर रहा है ना, द प्रॉब्लम कम्स if you shoot from there, ठीक है, you miss, you stand a chance of being in that negative stat वाला list कि तुमने बॉल पोजेशन लूज कर दिया इन द फाइनल थर्ड, ठीक है। वो वाली चीज आई थिंक इज मेकिंग द प्लेयर्स मूव मोर इनटू दीज एक्स्ट्रा, एक और पास दे दिया एक्स्ट्रा, मतलब वो जो एक्सपेंसिव फुटबॉल जो हम देखते आए ना, दो हाँ 90s का, अर्ली 2000 का, वो बाहर एक्सपेंसिव आउटसाइड द भाई, मैंने तूने आखिरी बारी आउटसाइड द बॉक्स शॉट कब देखा था? मैंने वो देखा था, वो सर्बिया वाला, बस वो भी इट हिट द पोल। हाँ, मतलब वो वही मैं बोल रहा हूँ ना। अब देख, आउटसाइड द बॉक्स बोल रहा है, इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक फ्री किक से गोल आया है, एक, एक। वो रैशफोर्ड का, विच वाज अ ब्यूटी, हाँ ब्यूटी। विच वाज अ ब्यूटी, ठीक है। हाँ वो तो चलो क्रिस्टियानो के साथ रह रहे के थोड़ा बहुत सीख लिया उसने, तभी हाँ मारा, वरना उसके बस की ना होती, ठीक है। हाँ क्या तूने कभी कोई वर्ल्ड कप देखा था जिसमें राउंड ऑफ 16 का पहला पहला है गेम, ठीक है, ग्रुप के सबसे ज्यादा गेम्स होते हैं, अभी तक एक फ्री किक से गोल आया हो, एक, ओनली वन? बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, लोगों का जो एंटायर प्ले हैज टर्न्ड इनटू, और आई वुड ब्लेम टू पीपल फॉर दिस। पेप नंबर वन, गार्डियोला। पेप गार्डियोला। नंबर टू, यर्गन क्लॉप। क्योंकि टिकी टाका। इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, दैट इज मोर ऑफ अ टीम टीम स्पोर्ट, वो टीम से कर करके, टीम टीम कर करके, दैट इज व्हाई वो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है ना, अब मे बी पीपल माइट से दैट इज अ गुड थिंग कि टीम स्पोर्ट है, हाँ टीम स्पोर्ट की तरह चल रहा है, हाँ बट हाँ वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो मैं बोलूंगा ना, ठीक है, हाँ वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस चली गई है स्पोर्ट्स, ठीक है। हाँ, वो तो चली गई है। अब आई आल्सो एक्सप्लेन, यू सी, आज की डेट में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो एंड मेसी को नेक्स्ट लेवल पे रखो, दे आर द नेक्स्ट पीपल, दे आर नॉट करेक्ट। ह्यूमंस। राइट। लेट्स टॉक अबाउट आज के डेट में, हालैंड, ही इज अ गोल स्कोरर, ठीक है। भाई रोनाल्डो at this age, after I think 33 34, he transformed into only a poacher or a goal scorer, ठीक है। करेक्ट। Haaland is doing that at the age of 21, हाँ ठीक है, 21 22 whatever his age is, 21 22 23, ठीक है। हाँ You see एम्बाप्पे, ठीक है, हम्म एम्बाप्पे की भी जो ट्रिक्स और जो ट्रिकरी है ना, दैट इज हम्म ओनली लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू, मे बी फुट ओवर्स और समथिंग, ठीक है। हाँ नेमार का थोड़ा ज्यादा है, बट नेमार को हम बोलते हैं डाइविंग एंड ऑल स्टफ में वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। करेक्ट। उसके अलावा मुझे एक बार एक और प्लेयर का नाम बता दे हु इज एक्चुअली, ओ कम ऑन, दैट इज सच अ पुअर टच, दैट इज द वर्स्ट टच, आई थिंक लुकाकू वुड बी प्राउड ऑफ। Who is this player right from US? Look at this first touch. वाह, पुलिसिच है क्या? Right, some right. राइट है क्या? अच्छा। लड़की गाली दे रही है क्राउड से। हाय 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 हाय, ये अभी आया है, बेंच से आया है, राइट, 19 नंबर। लड़की गाली दे रही है क्राउड में। हद है मैन, जिसकी आंख, हग दिया भाई। Lukaku would have given a standing ovation to this kind of a first touch. ये लुकाकू का टच था। हम दे देते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। हम दे देते हैं और क्या, मतलब ये तो इतना ही, हम तो रोटी सलूट दे देते हैं। बिल्कुल। हम जो गोल गोल, यूएस कम, फाइनली 75वें मिनट में एक गोल आया। राइट हैज स्कोर्ड, राइट हैज स्कोर्ड। चलो, he amended his mistake, पुलिसिच की बॉल।
I think so. Right has scored. Let me check. रुक बता रहा हूँ. पुलिसिच. हाँ राइट ही है. 19 नंबर है ना. राइट. तुक्का लगा है. तुक्का लगा भाई. पिच बैक ऑफ द हील है भाई. बैक ऑफ द हील है भाई. अरे बैक ऑफ द हील भी नहीं, पर कुछ मेरे ख्याल से गलती से पैर अड़ गया उसका. इवन अरे पता है ये लुकाकू बैक ऑफ द हील भी नहीं है. तू देख, ध्यान से देख. एक सेकंड. पैर से लग के उछल गई बॉल बस. एक सेकंड. सो और राइट यहाँ पे 2 फर्स्ट टचेस का दिखाते हुए अपने, एक लुकाकू वाला और एक. भाई ये लुकाकू वाला टच था. ये बाकायदा लुकाकू वाला टच है. ड्रैग करता हुआ वो एंगल पे ड्रैग करता वाला है और ये बाहर जाती बॉल. बट चिप देखा था कितना प्यारा चिप गया है. चिप थोड़ी है वो. जो यहाँ से लगा. यहाँ से. हाँ यहाँ से लगा. बट गोलकीपर के लिए तो चिप ही हो गया ना भाई. भाई इसको कहते हैं किस्मत. यही किस्मत चाहिए थी यूएस को. Oh, come on. No. Oh, बच गए. That was a good goalkeeping. बाहर आके बचा लिया. Netherlands are in shock right now. वो तो हिलेंगे ना भाई. मैं तो अभी वो मीर को बोल रहा था. बोलता तेरा प्रेडिक्शन क्या. मैंने देखा 2-0 चल रहा है अभी तो. नेदरलैंड खेल जाएगी लेकिन मेरे को चाहिए यूएस जीत जाए. You want US to win? Oh, come on. It's hi. Who was this? Bergwijn. My goodness. ये आज तो सारे मेरे को लग रहा है लुकाकू को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. ये देखिए मैंने अभी यही बोला था जब उसने स्कोर किया था ना. इसने क्या नाम है इसका तुम्हारा एक्स यूनाइटेड प्लेयर जिसने सेकंड गोल करा था. क्या नाम था उसका. ब्लिंड ने. मैंने ये ब्लिंड का यूनाइटेड ने चूतिया काटा. बर्गवाइन का स्पर्स ने बर्गवाइन का चूतिया काटा. आया तो तब था जब होजे मरीनियो. I think Jose Mourinho got him in. And then shipped in. I think so. And then shipped him out. By the time he left, he shipped him out. नहीं शिप आउट तो इसने किया. कॉन्टे ने करा शिप आउट. बच गया भाई. आखिरी के 13 मिनट है ना बड़े इंटरेस्टिंग होंगे. Exactly. Now the game अब होगा अगले 10-12 मिनट होगा. बवाल कटेगा. यूएस अब आया. अबे लेफ्ट फुट से क्यों मारते हो जब मैं क्या तुम्हारा राइट फुट स्ट्रांग है. पुलिसिच. See, I am gunning for Netherlands because I want close encounters in quarters, semis and all. अगर यूएस पहुंच जाती है ना क्वार्टर में तो अर्जेंटीना के लिए I think it will be easy. तो भाई क्या वो नेदरलैंड भी पहुंचे तो भी तो आसानी होगा जिस हिसाब से नेदरलैंड खेल रही है. ना. नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना वाला मैच क्लोज जाएगा बिकॉज आई टेल यू उस मैच के अंदर लुई वैन हाल देख वो गंदा फुटबॉल खेलता है मेरे को पता है. ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव वाला. बट वो इफेक्टिव फुटबॉल होता है. अगर उस मैच में भी अगर गलती से नेदरलैंड ने स्कोर कर दिया ना ये रुला भाई. वो फाइल देख रहे थे. तेरे को फाइल से कुछ याद आया. फाइल में सारे नोट्स लग रहे हैं. नहीं फॉर्मेशन है सारी प्रिंटेड. और क्या. But I have a question for you and I'll put you on this in the spot. Do you think Louis Van Gaal's army is horny enough today? यार स्टार्टिंग में तो थी बट अभी तो लग नहीं रही है. लग नहीं रही है. The steam has finished, I believe. स्ट्रीमिंग उनकी पुअर हो गई है क्या? हाँ स्टीम उनके खत्म हो गया है and they're looking for more steam to come in. Looking for more masochism. हाँ exactly. माइक स्मॉलिंग को लेके आओ. माइक स्मॉलिंग को यूएसए का चांट होता हुआ. पुलिसिच का अगेन अनदर क्रॉस कमिंग इन. सीधे गोलकीपर के हाथ में. बैक थोड़ा सा और स्वर करा लेता. Oh come on, that is such a stupid goal to concede. कौन कर गया? तू replay देख. What was US defense doing? सो रहा होगा. 3-1 game over.
Look at this. The easiest goal of this tournament. पीछे खुला. Look at the crowd. Look at the US guy in the crowd. He's hiding his face. Simple ball. Dumfries. Simple ball. Nobody tracking Dumfries. Simple goal. भाई वो पीछे जॉग करते हुए आ रहा है वो. इससे अच्छा मौका अगर डम्फ्रीज ने बाइक के लिए वाइड कर दी होती ना, भाई मेरे से गाली खा जाता वो और ज्यादा. अरे वो इतनी ज्यादा लुकाकू को सब नहीं दे रहे आज. उसको सारा कुछ डेडिकेट नहीं कर रहे. बहुत कर दिया. तो ये खा जाता है ऐसे डम्फ्रीज. such a poor goal to concede in World Cups, man. अबे मतलब दिस इज बेसिक जूनियर फकिंग थिंग ब्रो. Exactly. लुक अब मतलब शोल्डर के ऊपर देख ही नहीं रहा है भाई वो. मेम्फिस मेसी. Such a poor goal to concede, man. I think easiest goal of this World Cup. Easiest goal of this World Cup. Simons. पता आज ये मेम्फिस मेसी हंटलर का वो क्रॉस कर गया. 44 गोल कर गया. 6 गोल दूर है आरबीपी से. He will become the highest, ना? हाँ, हाईएस्ट हो जाएगा. किसने सोचा था जब यूनाइटेड में he was such a poor player कि ये नेदरलैंड्स का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ देगा. बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट, वैसे he is not that great in terms of his club football career as well. बट वो है कि इंटर कुछ अगेन देयर आर टिक जाता है भाई. ये गोल कर देता है वंस इन अ ब्लू मून. बट वही मैं बोल रहा हूँ ना सिस्टर, देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु आर गुड इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स विद द इंटरनेशनल टीम्स, राइट? हाँ. So Memphis is one of them. हाँ, Memphis is one of them, yes. With Barcelona, he was not that great. नहीं, बार्सिलोना में तो bloody shot all over the bloody field. Exactly. यूनाइटेड में ही शॉट. ओए फ्रैंकी डियोंग. यार सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं पूरे मैच में. क्या लगता है? ओ लवली बॉल. कैन यूएसए मेक अ मील आउट ऑफ इट? Nah, I think हो गया ना. the way they conceded also, I think that has ended any scope. मेरे को भी नहीं दिख रहा. You concede a goal in a proper way. Don't consider it like this. This was as stupid as it gets, man. हाँ, exactly. और अभी तो वो भी नहीं बोल सकते कि ठीक है 95th मिनट था और everybody was attacking, तो पीछे कोई ये भी कुछ भी नहीं था बे. Exactly. कुछ भी नहीं था यार. It was stupid to concede a goal like this. You were already coming back in the game and then you fuck it up like this. Yeah. बिल्कुल. So जो हम 2-0 पे कह रहे थे गेम ओवर है, वो अब आई थिंक अब तो डेफिनेटली हो गया. Yeah. It could have been 3-4, sorry, just हाँ. missed. भाई ये शोल्डर ड्रॉप हो गया. अब ये गेम एक्चुअली में डन है. यहाँ पे अरे एक टाइम होता था ना, जब मैं स्टेट बास्केटबॉल खेलता था ना, तब अब एक हाफ जनरली मतलब एक क्वार्टर 12 मिनट का होता है बास्केटबॉल में ना. राइट. तो होता क्या था, जब कोई वीक टीम के साथ खेल रहे हो ना और स्कोर सारा बढ़ता जा रहा है, तो क्या करते थे, हाफ को छोटा कर देते थे, क्वार्टर को छोटा कर देते थे. तो एक टाइम होता था
12 मिनट से आके 5 मिनट हो जाता था, 5 से 2 मिनट भी हुआ है क्वार्टर। तो जो अच्छा। चीज 12, 24, 36, 48-50 मिनट्स में खत्म होना चाहिए ना, 50-55 मिनट में खत्म होना चाहिए, वो साला आधे घंटे में खत्म हो जाता था। क्योंकि अच्छा। हमारे 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 रेफरीज ऐसे थे यार, दूसरे को बुरा ना लगे, उनका वो कॉन्फिडेंस ज्यादा लो ना हो, 100-150 से हार हाँ जाएंगे। तो तो ऐसा होना चाहिए था। अब यार गेम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया खत्म, यार खत्म करो गेम को। बट वही है ना, अभी से 5 मिनट पहले तक तो गेम अलाइव हो गया था, वो तो इनकी हाँ वही चीज है ना। अरे आखिरी के 5 मिनट में बचा ही गया है यार। अब वो चीजें इट इज मे बी इट इज बिकॉज यूएसए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारे तो प्रीमियर लीग में 3-1 से 3-3 देखा है, 3-0 से 3-3 देखा है। एब्सोल्युटली। लेकिन वही चीज है, प्रीमियर लीग, आई वेरी रेयरली हैव आई सीन एनीबॉडी गोइंग फ्रॉम 3-1 to 3-3 in the World Cup. I have not seen so many times, and maybe I have not seen it at all. I saw this World Cup in that group game between हाँ 3-1 3-3 ना, Cameroon कैमरून वाला। Cameroon and Serbia. हाँ That was a classic. मैंने नहीं देखा था ना वो गेम। हाँ, that was a classy. हम्म। 3-1 down they were, and then they drew 3-3 Cameroon. अबे लेकिन 80वें मिनट में थोड़ी ड्रॉ किया था। नहीं, 80वें मिनट में नहीं किया था, but it was like 3-1 and then they came back 3-3. हाँ हाँ, अब तो like 3 मिनट और then added time, तो it's over only. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली द पॉइंट ना यार। अब तो एडेड टाइम आएगा आएगा, आते सार वो उसका खत्म ही हो जाता है। चल, I'll ask this tricky question to you कि हाँ। हमारे पास राउंड ऑफ 16 के सारे फिक्सचर्स हैं, ठीक है, हम्म। and I want this a very calculative response from you, and I'll also give mine once you tell, and we can revisit that later as well. हाँ Which game do you think will go to extra time, and which game do you think will be decided in penalties? You can name more than one also, but which one do you think? राउंड ऑफ 16 में हाँ, जापान क्रोएशिया विल गो इनटू 120 मे बी पेनल्टीज। अच्छा, any other game you find going that route? पोलैंड वाला गेम जो है, पोलैंड का किसके साथ है? पोलैंड का फ्रांस के साथ है। नहीं जाता वो तो 90 में खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ उसमें कुछ नहीं पता। वेट, so if we revisit, it's इसके बाद अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जापान क्रोएशिया, we have ब्राजील साउथ कोरिया, हाँ we have उधर से फ्रांस पोलैंड, we have इंग्लैंड सेनेगल, we have पोर्चुगल रिजल्ट आ गया क्या क्या स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल स्विट्जरलैंड, we have मोरक्को स्पेन. भाई एक ही जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। अच्छा, you are saying all rest are finishing in 90? मेरे हिसाब से 90। इंग्लैंड, ये मोरक्को स्पेन इज डाउट। ब्राजील पोर्चुगल स्विट्जरलैंड कैन गो इनटू 120। अच्छा, पोर्चुगल स्विट्जरलैंड कैन गो 120 एनी डे, बिकॉज जिस हिसाब का खेल उन्होंने कल खेला था ना, दे कैन गो। इंग्लैंड सेनेगल नहीं, आई डोंट थिंक सो, 90 में खत्म हो जाएगा। unless England fuck it up, which I know they can any day. Brazil South Korea nahi. Japan Croatia will go to penals. so for you it is one game out of 8 which is going going into to going to 120 and one in penals. one in penals by penalties. Okay. I'll give a rather a very bold prediction and the hunch which I'm getting. So Argentina versus Australia is going to extra time. नहीं जाएगा। I have a feeling. आज ही का मैच जा रहा है। हाँ नहीं जा रहा। मेरे को नहीं दिखता जाता। अच्छा चल, मैं अपना बता तो दूं पहले। हाँ जापान क्रोएशिया मुझे भी लग रहा है मेरे को तो पेनल्टी जा रहा है। हाँ, मतलब it can go all the way. इंग्लैंड सेनेगल भी मुझे लग रहा है, क्योंकि सेनेगल इज नो पुशओवर और इंग्लैंड फक्ड अप अगेंस्ट यूएस, ठीक है। इंग्लैंड कैन फक अप एनी डे, ठीक है। इफ इट इज वो हमारे फुटबॉल की साउथ अफ्रीका है। Exactly. So if it is a fucked up day for England, Senegal will take them down to the wire.
Senegal is no pushover. Why nahi? They'll take them. They'll send them home. They'll take them home. If They'll they are take coming them home, home. they are coming home. Acha. 6 minutes at a time. So for me, I see Japan, Croatia, Argentina, Australia. I have a very, very big hunch about the next game. Nah, ऑस्ट्रेलिया अगर उन्होंने ढंग से बस पाक करी, फिजिकल तो ऑस्ट्रेलियंस रहते ही हैं. I'm not saying you can see a surprise, but I see it is going to be a close game. Not like Netherlands USA, which was a easy victory now for Netherlands. I don't see it to be an easy victory for Argentina. Maybe they'll make me eat my words and they will thrash Socceroos 4-5-0, but I can't see that also happening in a round of 16. Portugal Switzerland बड़ा classic game होगा. I have a feeling. Switzerland is no pushover. Switzerland is no pushover. Portugal Switzerland, हाँ मैं बोल रहा हूँ Portugal Switzerland मेरे को भी लग रहा है. तेरे को अभी तक अच्छा मेरे को एक चीज बता, मतलब अभी तक the player who surprised you the most. That's a very very difficult question. Very difficult. I would say 2 players. हाँ, एक बोल, दो बोल, तू 2-3 बोल. In fact, I will say 3 players. हाँ. 1 negatively and 2 positively. The one player which surprised me, I'll start from a negative perspective, and I was really surprised because I was thinking that this player alone can take his team forward, and that was KDB. KDB was missing in the first 2 games. KDB turned up last half an hour against that game wherein Lukaku fucked up. Okay? KDB was the person who was giving him all the chances, right? But in the first 2 games, I was expecting a lot from him. So that is a negative kind of a disappointment, and that is a player which has surprised me. But now I'll tell you two names. One is Cody Gakpo. जो अभी substitute हुआ है. And the reason being because see, he was doing well for PSV Eindhoven, but this is different ball game altogether. A World Cup. This is a national team. So him turning on the screws, and when Memphis also was not available, getting available, and the way he was attacking as well as he was there in the defense, he was in the midfield, is like an overall kind of a player. So that has surprised me in a positive way. So that is another one. And finally, one more player who is a good player, but I was not expecting him to be so effective, at least so far in the group stages, was Marcus Rashford. I expected Rashford's name to come up. And the reason behind that is he has been pathetic in the past 3 years. He has been absolutely pathetic. For the club. For England also. England, he has not got enough chances also. Okay? That free kick of his has changed his perception, and at least in terms of my eyes, because now I see Rashford again going back to his basics and trying to be the player he was once. So बच्चों खाना खिलाना बंद कर दिया क्या इसने? नहीं, बच्चों को ज्यादा खाना खिला रहा है आजकल. ज्यादा स्टॉक आया हुआ है. ज्यादा स्टॉक आया हुआ है. ज्यादा स्टॉक. अभी उसको हरविंदर साहब पे लगाएंगे. हाँ, मोदी जी से बुला देते हैं इसको. हाँ बस. What about for you? यार बड़े सारे प्लेयर हैं जो इस बार इन्होंने अच्छा करा है. नहीं, but again you can't name everybody ना. 2-3 बता. Obviously नहीं, 2-3 मेरे हिसाब से yes. एक जो प्लेयर जिसने काफी इम्प्रेस करा गैप को, I've liked his play, the way he has made runs behind the players, behind the defenders. वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. The second one was I think so this guy Pedri has done well.
Pedri for Spain. He has impressed me. The reason why I didn't name him because I was expecting him to perform the way he has. हाँ, and एक नाम I think so जो मैं कल तेरे से बात कर रहा था, and this is out. ठीक है, yes, you've named Rashford as well, and बाकी सारी चीजें भी हैं. Yes, a lot of players have performed. That's why I said एक player का नाम लेना is going to be very injustice also. But this name I think so should be there. One is Kudus. Kudus, right. That boy's performance. Yes. मतलब क्या performance दी है इस लड़के ने. Sorry to cut you there. So Netherlands become the first team to qualify for the quarterfinals. भैया हो गया full time. पहली team to go into quarterfinals. USA crash out. It's a handshake of King Louis with his staff. Yeah, well done. A simple handshake, and he puts his pen inside his blazer and walks off. Goes and meets the Americans. And he has waved to the crowd as well. अरे king है वो भाई. King है वो. डॉक्यूमेंट क्लोज हो गए हैं. आज का दिन का काम खत्म. आज का शटर बंद है. आज का ऑफिस खत्म हो गया. आज की अकाउंटिंग हो गई है पूरी. हाँ. आज की अकाउंटिंग हो गई है. He plays Argentina or Australia. The Aussie boys. Most probably Argentina only. Aussie. Oi. Aussie. So on that, I think so we have. So हाँ, मैं ये बोल रहा. Kudus, yes, is one of the players I've loved to. I've loved that guy in this performance this time around. Anybody you were surprised in a negative way? Like you were expecting a lot from him, but he didn't live up to the expectation? Not live up to the expectation. I believe Ronaldo has not lived up to his expectations, which I think you are being very preemptive in your Ronaldo अभी तक मैंने group stage की बात करी है. He can actually shut everybody's mouth with a hat trick in any game. मैंने सिर्फ group stage की बात करी है. उसके आगे की बात नहीं कर रहा मैं group stage की बात करी है. ठीक है. अभी तक रोनाल्डो has been quite negative, and I think so उसने और जो दूसरा है ना अपना Messi also has not done so much. Exactly. So ये दो मेरे हिसाब से even मेसी ने तो पेनल्टी भी मिस करी है. हाँ, कल ये पिछले गेम में. हाँ, पिछले गेम में. और एक कल भी तो पेनल्टी मिस हुई थी. किसने करी थी? वो आयु ने करी थी. हाँ, वो तो बहुत ही टट्टी पेनल्टी थी. तो नहीं तो मेरा कहना बस वही था कि यार अगर है तो यार वो ढंग से होना फिर, है ना. My only thing is that कि यार भाई अगर कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, वरना करो ही मत. क्यों? That is what it is. I think so that is the thing which is there for me. यार अगर करना है, and especially for the negative aspect, I feel that both these gentlemen who are from Mars or some other planet in the world of football, both of them have disappointed up till now. I don't know. I'm saying you are slightly being harsh with them because until now, at least in the group stages, I've been disappointed with them. I've been disappointed with them. Let's see how they do in the next stages. But let's see how they do in the next stages. Qualified. Yes. Let's get back in a couple of hours and let's see what Argentina does. Argentina कपड़े फाड़ेगी कि कैंगरू लात मारेंगे. Exactly. दोनों में से कोई एक चीज ही लग रही है. दोनों में से कोई एक चीज तो लग रही है भाई. अब दोनों में से कोई दोनों चीजें हो सकती हैं या एक चीज हो सकती है. I really don't know. So on that note, thank you very much. हम आपसे मिलते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे बाद. Exactly. We'll see you again.